अब recording भी हाँ start record. I can start. Yes, just hi सबको बोलो सब. Hi friends, can you hear me? This is Deepak Jaggi sir from Mumbai. So we start our live webinar. I can start. Hello friends, so this is Deepak Jaggi sir from Mumbai. I was reading your comments. Many people have requested me to take the lecture entire in English, as well as there were some students requesting for a Hindi lecture. So I'll just try to maintain a balance so that whosoever is attending this lecture, जो भी ये lecture attend कर रहा है, मैं English में भी बोलूँगा. I will speak in English as well as मैं हिंदी में भी बोलूँगा. I will also speak in Hindi, so that all the type of students will get equal benefits. Since the time is hello friends, so this is Deepak Jaggi sir from Mumbai. I was reading your comments. Many people have requested me to take the lecture entire in English, as well as there were some students. Yeah, friends, can you hear me? Are you there? Is there anyone on the chat box who can just say me, yeah, sir, I am audible to everyone? Since the time available is less, क्योंकि वक्त कम है, तो हमें बहुत ही जल्दी जल्दी very soon काफी कुछ cover करना है. We have to cover many things. So first of all, friends, a quick recap. Advanced accounts के अंदर the chapters what are very important chapters. I'll start with the chapter liquidation of companies. Now, liquidation of companies chapter के अंदर, friends, you need to remember first of all the legal order of payments. जो मेरे हिंदी के दोस्त हैं, आपको ये जानना जरूरी है बेटा कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर जब आएगा तो आपको लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट को याद करना बहुत ही जरूरी है. और लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट के अंदर आपको एक छोटा सा स्लोगन पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस स्लोगन. It's a very popular slogan which says like this. Usually I sing a song. Here maybe a short song. It says like this. Lo 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 sada peda dipped under pista elaichi. So lo basically stands for the legal cost, and the next lo stands for the liquidator's remuneration, and the next lo stands for the liquidation expenses, and then sada stands for secured liabilities, and peda stands for preferential liabilities, and dipped stands for debenture holders, under stands for unsecured creditors, and pista and elaichi. So pista is preference shareholders and elaichi is equity shareholders. Trust me, friends, now on 12th November, Parso, that is just day after tomorrow, it is your exams. So I am sure you guys are knowing many things. आप लोगों को काफी कुछ आता है. In fact, almost सभी कुछ आता है. You know almost everything. I can give you a tip at the last moment that when you are studying this liquidation chapter, जब आप ये chapter पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये legal order आता है, लो सादा पेड़ा dipped under पिस्ता इलायची, अगर आपको ये order आता है, your time will be saved. And आप सबको पता है, you all know pretty well friends, time is the most essential element. जो आपका success का key है, आपकी सक्सेस की बेटा चाबी है, वो है आपका वक्त. बिकॉज सीए इंटर का जो स्टूडेंट होता है, सीए आईपीसीसी का जो स्टूडेंट होता है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट इज ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज पेपर. एंड व्हेन सम बिग क्वेश्चन कम्स,
तो उसकी सोच में his thinking itself takes lot of time. So friends, we don't want that. This low सादा पेरा dipped under pista lychee, legal cost, liquidators remuneration, liquidation expense. Then you have got the secured liabilities, preferential liabilities, debenture holders, that is the liabilities with a floating charge, unsecured liabilities, preference shareholders, and equity shareholders. Remember this legal order. Say, if a question of final statement of account comes, अगर इम्तिहान में आपका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन आता है, सो आप बेटा पता क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द वर्किंग्स. आप अपने वर्किंग्स में आएंगे. वर्किंग्स के अंदर इमीडिएटली फर्स्ट आप लोग देखेंगे कि पैसा कहां कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर ऑल द मनी इज कमिंग. सो प्लस 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 सब पैसे आ जाएंगे. वंस यू गेट द मनी, देन यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी. फिर आपको सारी पेमेंट्स करनी है. पहले आप लीगल कॉस्ट को पे करेंगे, फिर रेमुनरेशन को पे करेंगे, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस को पे करेंगे. First, you will pay to the, as I said, your legal cost, then you will pay to the remuneration, then you will pay to the expenses, then you will pay to secured liabilities, जिनका एक fixed charge होता है, then you will pay to the preferential liabilities, that is basically nothing but all the government obligations, the statutory obligations, then definitely you will make the payment to debenture holders. जब आप बेटा डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, उस समय टिल देन यू विल मेक द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ओनली अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. हर बार यू विल अज्यूम, हर बार बेटा आप अज्यूम करेंगे माइंड में कि द कंपनी इज इंसॉल्वेंट. आई रिपीट वंस अगेन, every time friends you will assume that the company is insolvent. So at the time of making the principal payment, principal amount payment to the debenture holders, आप outstanding interest pay करेंगे, but only up to the date of liquidation. Then, if the company is able to make the full payment to unsecured liabilities, I repeat, अगर बाहर की जो liabilities हैं, जो unsecured liabilities हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर आप उन लाइबिलिटीज को पे कर सके, इफ यू आर एबल टू पे टू देम, देन डेफिनेटली फ्रेंड्स कंपनी सॉल्वेंट. और अगर कंपनी सॉल्वेंट होगा, देन बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट्स टू द शेयर होल्डर्स, यू विल पे द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. और सर ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कब से कब तक होगा? डेफिनेटली फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द लिक्विडेशन टिल द डेट ऑफ मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. ये खास एडजस्टमेंट. और जो मैंने गेस्ट पेपर भी बेटा निकाला है, आई हैव गिवन यू अ गेस्ट पेपर. आई हैव सिलेक्टेड सम 20 क्वेश्चंस with lot of research. These questions have been been given to the students. I'm sure you all must be having them. I have given it in fact with solutions. If you don't have, you put it in the chat box. I will send links personally to all. You can join our Facebook page, DJC, Deepak Jaggi Classes, DJC. Just give a message that you want this Super 20 questions with solutions. Drop your email ID. My staff will send you by tomorrow or probably today itself after a certain period of time. So liquidation के अंदर बेटा please remember, start with a working note, collect the money, start making the payments to the liabilities. जहां पर पैसा खत्म, wherever money is over, समझ लो आपका question हो गया खत्म. Yes, wherever money is finished, your solution is finished. Then you come to the main answer, and in the main answer, definitely you will just do the posting of whatever is the amount paid. This is in case of the question of final statement of account. Friends, in case if a question of statement of affair comes, chances are high, because in my Super 20 question, see, if you have got that, it is fine. Otherwise, I have got with me Super 20 questions. So in the Super 20 question, friends, if you see question number 19, I repeat once again, question number 19, this question is from practice manual only, XYZ Limited, and the balance sheet has been given to us. And in the next page, then he has given me, you can just check it. See, it is this question, friends, wherein 3 years gross profit and the expenses have been given.
So when you are preparing the deficiency statement, that is list H, so to get the figure of profit and loss account, you need to use that particular information. Whenever you are preparing list H in deficiency statement, जब भी आप list H बनाते हैं बेटा, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फिगर होता है, दैट इज लॉसेस, द डेबिट बैलेंस, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. उसमें आपको बहुत ही ज्यादा लेकिन ध्यान रखना पड़ता है. whenever you're doing statement of affairs question, मेरे सुपर 20 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है. So in case if that comes in exam, you have to know that low, that is legal cost and the liquidator's remuneration and the liquidation expense you have to ignore. उसमें ignore करते हैं. सर उसमें ignore क्यों करते हैं? Because वो estimate होता है. And in estimates you cannot do the estimation of expenses. आप लायबिलिटी की एस्टिमेटेड पेमेंट बेटा कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस आप नहीं अंदाजा लगा सकते. तो एल फर्स्ट 3 एल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के क्वेश्चन में नहीं आएगा. बी केयरफुल. अच्छा, नो इन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप लोगों को एक खास जो चीज मुझे बतानी है, इन केस इफ इट कम्स इन एग्जाम, दैट इज रिलेटिंग टू नॉशनल कॉल. हाँ जी, नॉशनल कॉल में आपको बहुत ही ध्यान रखना है बेटा. आई एम श्योर आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो आपको पता ही है. इट्स बेसिकली व्हाट के भाई बैलेंस शीट देते हैं, बैलेंस शीट के अंदर कुछ शेयर्स फुली पेड अप होते हैं, इक्विटी शेयर्स कुछ पार्टली पेड अप होते हैं. तो जो पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं, लाइक वेदर दे विल गिव यू द मनी और नॉट, so you will do definitely by which method? Yes, you should do that by the notional call method. और वो कब करना है सर? फ्रेंड्स वो आपको बिल्कुल लास्ट में करना है. सर व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट में करना है? आई मीन पूरा आपका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, सारे एक्सपेंसेस को आपने पे कर लिया, सादा पेड़ा डिप्ट अंडर पिस्ता सबको आपने पे कर दिया. जब आपको इलायची की देने की बारी आएगी, दैट इज व्हेन यू हैव टू मेक द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, then you will prepare a special note wherein you will give the notional call treatment in the working note, and you will come to know कि भले आपको वो पार्टली पेड अप शेयर होल्डर को पैसा देना है या प्रोबेबली उनसे पैसा लेना है, whether you have to give to them or whether you have to take from them. So be very much careful in liquidation of company chapter, because when you are giving the exam of advanced accounts, बेटा एडवांस अकाउंट के पेपर में भले वो न्यू सिलेबस हो या ओल्ड सिलेबस हो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आना ही है. मतलब अगर वो आना ही है तो आपको डेफिनेटली उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाना है. काफी वैरायटीज है इस चैप्टर में. You have got statement of affairs question, you have got final statement of account, you have got list B contributories, you have got receiver statement. आपको पता होना चाहिए रिसीवर स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बट इट इज लिटिल डिफरेंट. मतलब टिल डिबेंचर होल्डर्स यू विल प्रिपेयर अ रिसीवर स्टेटमेंट, एंड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर ऑनवर्ड्स, आई मीन अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज ऑनवर्ड्स, यू विल मेक द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. आई एम श्योर आप जो भी कोचिंग क्लास में जाते थे, जो भी आपने टीचर से पढ़ाई की है, व्हाटएवर you guys have done, you have done the best. So first of all, believe. See, whosoever is attending this particular webinar, friends, it is you who has to believe that yes, you can do this. And trust me, if you will believe, that day will be fantastic. I mean, ask to the universe that yes, I want 100 out of 100. And trust me, friends, you can get it. One of my student, Hardeep Singh, I repeat, it's not any advertisement mode, but even I'm getting very enthusiastic to say, Hardeep Singh, my interCA, in fact, he was an IPCC student, so he got 99 out of 100. So if he can get, why you can't get? Definitely you can get it, friends. But only thing is you need to be focused, and more than focused, now you need to believe on yourself. आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. दूसरा मेरा सुपर 20 के अंदर फ्रेंड्स, यहां पर मेरी बात जो चल रही है, दैट इज नथिंग बट अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का एक क्वेश्चन है, जहां पर मैंने गेस किया है कि मे बी दे विल आस्क यू द ओपनिंग एंट्रीज
in the books of the new company or the purchasing company. So be careful because CA फाइनल का जो ओल्ड सिलेबस है उनमें से कई टॉपिक्स, मेनी टॉपिक्स फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस हैज कम इन द न्यू सिलेबस ऑफ इंटरसी या आईपीसीसी, जो भी आप क्लास बोल। तो अब इसमें ऐसा है कि अमालगमेशन ऑफ कंपनी इन द ओल्ड सिलेबस सीए फाइनल, यूजुअली जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं ना, दे आर इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी। इंटर सीए या आईपीसीसी के ओल्ड सिलेबस में पहले जो आता था, यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग बाय रूल, बट यूजुअली इट वाज बुक्स ऑफ ओल्ड फॉर्म, दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग, जहां पर आप वो रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, वो सब अकाउंट बनाते। तो मेरे गैस वर्क के अंदर जो हमने गैस किया, थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, सम टीचर से बात की है, व्हाटएवर, तो हमने गैस किया है कि प्रोबेबली लाइक यू नो बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी जो सीए फाइनल में पूछते हैं, समथिंग लाइक दैट दे कैन आस्क यू इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। सो बी केयरफुल। उसमें 3 बेसिक एंट्रीज तो आप सबको आना चाहिए। वन इज ऑफ कोर्स फॉर द बिजनेस परचेज, another is nothing but for the net assets taken over, and then definitely third is nothing but for the discharge of purchase consideration. See friends, amalgamation का question अगर आता है, amalgamation of companies, I repeat, if a question of amalgamation of companies coming, and it if means that's a wrong word, it has to come, वो आएगा ही। तो आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान देना है। अब आज से लेकर परसों सुबह तक, whenever you are doing amalgamation, friends, I give you a tip that at least 10 questions you solve. I repeat, at least 10 questions you solve only for purchase consideration calculation, nothing else. Only PC calculation. Because the student who knows PC calculation in amalgamation chapters, he knows that particular chapter. So don't waste time in doing big, long questions in the house. Come on, friends, have confidence in yourself. मतलब you need to be a smart, student. जितना hard work आप करना चाहते थे, you have done throughout, and you have done very good, fantastic. Now this last 1.5 day is the smart work day. So when you will do smart work, I am sure आप चकदे फटे करेंगे। आप देखना आप कहां पर पहुंच जाएंगे। तो परचेज कंसीडरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दैट। ऑफ कोर्स इफ इट इज क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, दैट इज द वेंडर कंपनी, जहां पर आप रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाते हैं। जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, दोज हु हैव बीन माय स्टूडेंट, आई गिव वन अगेन, इसके अंदर भी हमारा एक स्लोगन होता है, तू प्यार से लव प्यार कर। तू इज नथिंग बट द ट्रांसफर, प्यार इज नथिंग बट द परचेज कंसिडरेशन। To pyar se, S is nothing but sale of assets which are not taken over by the purchasing company. E is expenses payment. To pyar se love, love is nothing but liability payment which are not taken over by the purchasing company. To pyar se love pyar, that is P is preference shareholder settlement. And finally kar, kar मतलब C वाला kar, C, that is nothing but closing of accounts. Of course, see, I don't want you guys to change your method at this moment. So friends, whatever you have done, आपने बेटा जो भी किया है बहुत ही बेहतरीन किया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको अमालगमेशन चैप्टर में थोड़ी तकलीफ आ रही है, बिकॉज ये चैप्टर में यूजुअली बच्चों को तकलीफ आती है, तो आप हमें लेकिन चैट बॉक्स में लिख भेजिए, तो मैं आपको कुछ अमालगमेशन चैप्टर के स्पेसिफिक टिप्स आपको टाइप वगैरह करके भेज दूंगा। अब जैसे मैंने आपको बोला, एफबी पेज में डीजेसी में आप आ जाइए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू डू इट। ऑफ कोर्स आई मीन आई कैन नॉट डू मच, बट कोशिश करूंगा। इफ आई कैन डू इट, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो अमालगमेशन ऑफ कंपनी में फ्रेंड्स, बी केयरफुल फॉर द ओपनिंग एंट्रीज, इंटरकंपनी डेट्स कैंसल की एंट्री, then probably stock reserves की entry, like unrealized profit की जो entry होती है, because if a question is coming final CA level का, old syllabus का, तो definitely they can ask you something such good things as such. उसके बाद friends, I just want to discuss something about banking company accounts. अब मेरे सुपर 20 क्वेश्चन में बैंकिंग में प्रोबेबली आप लोग सोचेंगे कि सर आपने ये क्या दिया, बट मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया,
We are coming with rebates on bills discounted का question and AEO का question. Because that big question जहां पर you have to prepare an entire final accounts and balance sheet and profit and loss account, वो अगर आ जाता है तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स वो ज्यादा आसान होता है. इट इज लिटिल लेंथी, वो बड़ा होता है लेकिन वो सिंपल होता है, वो स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है. रीबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, दैट इज अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट के आप 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में करके जाएंगे. प्लीज बिफोर यू आई मीन लाइक यू नो गो फॉर योर एग्जाम्स, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस मैनुअल में, आपके क्लासेस के बुक में, आई एम श्योर इट मस्ट बी देयर. So please do them. That is very important because they are that type of topic. वो ऐसा बेटा एक टॉपिक होता है जिसके अंदर आपको फुल मार्क मिल सकते हैं. मतलब आई मीन यू कैन जस्ट गेट 6 to 7 मार्क्स, फुल मार्क्स, उसमें आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा. सो बी वेरी मच केयरफुल. फंडा ऑफ अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए. What is funda of unexpired discount? It is nothing but discount income received in advance. And last year received in advance is this year's income. So if it is this year's income, add to the income of discount. But current year unexpired discount is not current year's income. It's a liability. So it should be reduced. वो आपको current year की income से reduce करना पड़ेगा to get your final income, जो finally फिर profit and loss account में transfer होगा. In fact, unexpired discount में अगर final accounts का भी full question आता है, they can give you an adjustment. So be careful. Unexpired discount के adjustment आप बिल्कुल करके जाइए. Final accounts के question के अंदर they can give you the number of days and the date of bills and all. Because student usually क्या सोच के जाता है, भाई unexpired discount का question आएगा तो वो एक separate आएगा, final account is separate. But बेटा वो combine भी कर सकते हैं, वो दोनों questions को merge कर सकते हैं. Because CA Institute is becoming competitive. आप लोग सब होशियार बच्चे हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आप लोग कर रहे हैं. सो डेफिनेटली बेटा वो कहां ना कहां थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस पेपर्स में करने की कोशिश करेंगे. सो माय बेट फॉर बैंकिंग अकाउंट्स इज फॉर द अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट क्वेश्चन एंड आल्सो फॉर द AEO. What is AEO, sir? AEO is nothing but acceptances, endorsements and obligations. So acceptances, endorsements and obligations का जो क्वेश्चन होता है, इसका बेटा जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज ऑन द TPG. सर व्हाट इज TPG? इट इज थर्ड पार्टी गारंटी का कॉन्सेप्ट है. मतलब या तो आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करो, और अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो कंटीजेंट एसेट को भी रिकॉर्ड करो, कंटीजेंट लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करो. देन यू हैव टू रिकॉर्ड फ्रेंड्स द कंटीजेंट एसेट्स एज वेल एज द कंटीजेंट लायबिलिटीज. So I mean, like you know, first time when it had come in exam, I still remember. I mean, students were, I mean, totally taken aback. Like बिल्कुल हैरान हो गए थे, अरे ये क्या आ गया? Because it was first time. हालांकि मॉड्यूल में वो क्वेश्चन था, मैनुअल PM में भी था. Still students ने उसको लाइट समझा था, एग्जाम में आ गया था. उस समय वो 11 मार्क का आया था जब पहली बार आया था. First time it had come for 11 marks. Now it comes for around 5 to 6 marks. Chances are there, so don't ignore that. उसमें भी वैसा ही है, either you can get full marks or you will get 0 marks. मतलब उसमें बीच का गेयर नहीं है, या तो पूरा मिलेगा या तो 0 मिलेगा. उसमें आपको 1-2 मार्क ऐसे नहीं मिल सकते. either you are correct or you are incorrect. तो मेरे बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर दो लाइक यू नो बेट्स जा रहे हैं. one is for the rebate on bills discounting and another is for the question of acceptances, endorsements and obligations. उसी का भाई है समझ लो बिल्स फॉर कलेक्शन, वो भी कुछ ऐसा ही है. बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट भी वो आपको पूछ सकता है, प्रैक्टिस मैनुअल में उसका क्वेश्चन है. एक बार जरूर आप करके जाएं, प्लीज डू दैट. आई एम श्योर इट विल गिव यू सम गुड कॉन्फिडेंस. In case if a question of balance sheet comes in a bank, that will be fantastic. Wow, what do you more you want? You just remember, call Rajiv in Delhi, Bombay or Calcutta, but Indira asks for others. Chamchas bhai. Yeah, I mean, like, you know, for every chapter, I usually use this code words. Once the concept is clear, फिर ये code words बहुत ही help करते हैं students को, because exam में time management is one of the biggest factor. So call is capital, Rajiv is reserves and surplus, Delhi is deposits, Bombay is borrowings, or is other liability and provisions.
called Rajiv in Delhi, Bombay, or Calcutta is cash in hand and balance with the RBI. But is balance with the banks and money at call and short notice. But Indira is investments, ask is advances, for is fixed assets, other is other assets. और दो footnotes होते हैं. There are two footnotes. Chamcha's bhai. So Chamcha's C is nothing but contingent liabilities and bhai is bills for collection. So for that I always say to the students, I mean what you should do the moment you go in the exam, the moment you see a question of banking account has come, जैसे आप देखते हो कि भाई बैंकिंग का क्वेश्चन भैया आ गया एग्जाम में और बैलेंस शीट पूछा है उसने, तो आपको क्या करना है, ना आओ देखो ना ताओ, सीधा आप ये फर्स्ट लेटर्स लिख दो, कॉल राजीव इन दिल्ली बॉम्बे और कलकत्ता बट इंदिरा आस्क फॉर अदर्स चमचास भाई, पूरा मत लिखना, जस्ट फर्स्ट लेटर्स. एक बार आपको लीड मिल जाएगी, once you get the lead I'm sure you can complete it. Any such shortcuts, beta I repeat, any such shortcuts, any steps, because for me as a teacher I know it that steps are very useful. Even when I was a student it made a lot of difference. So all the steps we have got, if you don't have beta, please let me know, I'm there to help you guys. See, this is not any, every time it is not give and take. भाई आप मेरा ये लो वो लो ऐड करो, कुछ नहीं, आप के कुछ काम आ जाऊंगा, आई लव इट. ऐसे भी कल मेरा बर्थडे है यार, इट इज माय बर्थडे, सो इट्स माय बर्थडे गिफ्ट फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स. एडवांस अकाउंटिंग में यू डू गुड, आई विल बी वेरी मच हैप्पी, आई विल बी वेरी मच हैप्पी. So friends, this was something about relating to the banking accounts. See, you can send us a email, send your email ID, message your email ID on the chat box or on the Facebook page, as I said, for Super 20 questions as well as any other queries. I'm there to help you guys always. अच्छा, अब मैं जरा बात कर लेता हूं, that is something relating to बी केयरफुल. ये मेरे पास अब एक क्वेश्चन है रिलेटिंग टू बायबैक ऑफ शेयर्स. Now buyback of shares में the minimum requirement of equity shares, that type of question can come in the exam, chances are high. And buyback of equity shares, maybe just remember one step. I mean, we always teach the students with a step. It says that first drink beer bottle. और सर क्या कर रहे हो आप? I mean, what you are doing on YouTube channel? You are saying the students to drink beer. No, I'm not saying. Sorry, I'm just saying. मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप ये steps याद रखिए, आपका buyback of equity share खत्म हो जाए. टेंशन फ्री कीजिए. First sit, first drink beer bottle. Sir, what is first? It is nothing but check, confirm whether all the shares which are to be bought back are fully paid up or not. So fully paid up. First sit is nothing but sundry transactions. First sit again first, it is nothing but fresh issue. And when you're doing buyback of equity shares, it has to be buyback fresh issue only of preference shares. क्योंकि अगर आप fresh issue of equity share करते हैं, then the purpose of buyback will be defeated. वो dilution हो जाएगा नंबर का, फिर कोई मतलब ही नहीं उसका. So first sit, first drink. Drink is nothing but divisible profits. You can also use your security premiums and you can, create the CRR, capital redemption reserve. So first sit, first drink beer. Beer is nothing but buyback. So buyback की फिर आपकी जो भी entries होती है, whether you're buying bank at at par or maybe at premium, जो भी आपका buyback की entries आप वो करेंगे. And finally beer bottle. Sir, what is bottle? It is nothing but bonus shares. So in case अगर वो आपको क्वेश्चन में बोनस शेयर्स के बारे में कुछ बोलेगा, so then definitely you have to do at the end. I mean पहले बायबैक होगा फिर बोनस इशू आपका डिक्लेयर होगा. So मेरे सुपर 20 क्वेश्चंस के अंदर in my super 20 for buyback my bet is going for calculation of the maximum number of shares. I mean he will not give you, वो आपको नहीं देगा बेटा कि कितने शेयर्स बायबैक करने हैं, तो आपको वो खुद निकालने पड़ेंगे फॉलोइंग द कंपनीज एक्ट एज सच. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इन ग्रुप 2 आल्सो, वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में माय बेट इज गोइंग फॉर जहां पर से इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो शेयर होल्डर्स हैं एंड फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ Mr. X and Mr. Y in Green Limited.
तो मिस्टर एक्स के पास कुछ 12% फर्स्ट डिवेंचर्स हैं, 12% सेकंड डिवेंचर्स हैं, सम ट्रेड पेएबल्स, एंड देन शेयर्स आर फुली पेड अबाउट 50 शेयर्स. मतलब इन शॉर्ट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, but in that it is not a straight question. Be careful. So you need to have that proper calculations. So in my Super 20, which I have already posted, I have also given you the solutions. So it's not only the question or the problem, solutions are there. So मेरा आपसे निवेदन है, I plead to you, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, I plead to you, आप ये Super 20 के क्वेश्चन जरूर करें. मैं बोलता हूं नहीं भी कुछ आता है, लेट अस अज्यूम दैट एक भी क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेट अस अज्यूम दैट, हम क्यों इतना सोचे, व्हाई वी आर थिंकिंग दैट समथिंग विल कम, बट स्टिल दे आर फ्रॉम योर सिलेबस. एज इफ आल्सो यू हैव टू स्टडी समथिंग, एज इफ आल्सो आपको प्रैक्टिस करना ही है हर चैप्टर में से, तो आप क्यों नहीं यही कर लेते हैं, इट विल गिव यू सम मोर कॉन्फिडेंस. भले कुछ और भी एग्जाम में आ जाए, बट ये क्वेश्चन करने से आपके सारे चैप्टर्स तो रिवाइज हो जाएंगे इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. So please try to do that. Now before I go ahead, since the time is not there, it's already 10:30 in fact, I want to explain you one concept of time management. Very much important before we wind up. You know pretty well friends, exam के अंदर आपके पास 3 hours होते हैं, 3 घंटे होते हैं आपके पास एग्जाम में. 3 hours into 60 minutes if you do. So you have got better how much minutes, how much time you have got in exam? 180 minutes. 180 minutes. आप ये 180 minutes को divide this by 100 marks. So when you divide this by 100 marks, so you have got how much? You have got 1.8 minute per mark. You have got how much? 1.8 minute per mark. So in short, if a question is of 10 marks, so you will just do what? 1.8 into 10 means maximum you have got how much minutes? You have got 18 minutes to solve that solution. If a question is of 15 marks, multiply that by 1.8, so you will get maximum 27 minutes. Trust me friends, my experience, I am 25 years old in this profession, not 1-2 years, 25 साल. So 25 years का मेरा experience आपको बोल सकता है that if you complete your advanced accounting paper, आपको कोई माइका लाल फेल नहीं कर सकता. No one can fail you, but you have to complete. I mean, you have to attempt all questions. If the moment 27 minutes is over now for a 15 mark question, जैसे ही 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए 27 मिनट खत्म हो जाता ना, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. अब उस क्वेश्चन में जितना आपने किया, यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन इंटर सीए, इन आईपीसीसी, इन अवर सीए एग्जाम, दैट अगर आपने कुछ सही किया आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स. सो प्लीज रिमेंबर दिस 1.8 मिनट का फंडा. आई एम श्योर फ्रेंड्स यू विल पास, एंड यू विल पास विद एन एग्जाम्शन, 100% एग्जाम्शन. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, I think so. The seminar time is over. We have lot of things, but still, like somewhere, but we need to wind up because आप लोगों का exam भी है. As for Super 20 questions are concerned, Super 20 questions will be uploaded on our FB page. You can download them. So my staff has just now given me instructions, so we will do the needful. So don't worry, beta. There were many English crowd, many Hindi crowds. I just try to have a balance. मैंने कोशिश की. माफी चाहूंगा आप लोगों से अगर आपका मैंने टाइम कहां पर वेस्ट किया, बट मुझे ऐसा लगता है I tried that it can help you. 4 लाइन आपको बोलना चाहूंगा कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है. क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है. मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, मायूस ना हो अपने इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है. तो मेरे दोस्तों, कम ऑन, डू इट. दिस टुमारो 24 आवर्स इतना स्मार्ट वर्क कीजिए, इतना अपने दिमाग का, जितना आपने इतना अकाउंट्स पढ़ा है 11वीं कक्षा से, इतना जबरदस्त एडवांस अकाउंट्स में उसको इस्तेमाल कीजिए.
कि मजा आ जाए और हमें भी थोड़ी सी दुआएं दे देना. So thank you so much. Join our Facebook page, Deepak Jaggi Classes. Facebook page है बेटा हमारा. हमारा YouTube चैनल डेफिनेटली एक तो सीए ड्रीम्स भी हमारा ही चैनल है. वी आर ऑल्सो वन ऑफ the people. We really thank to CA Dreams for giving us this platform. हमारा एक और चैनल भी है टारगेट सीए. सो फ्रेंड्स आप लोग डेफिनेटली अच्छा करेंगे. आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, सो प्लीज लेट मी नो. आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस. And Chennai and South Indian students, if you are watching me live, so I am coming now. My recorded lectures will be played in Chennai very soon. 100% English, and of course North के अंदर तो definitely हमारी पेन ड्राइव वगैरह चलती रहती है. So right now I sign off. Thank you so much and bye bye. Good night. Have a very good exam. Love you all. Thank you.